Good morning, everyone. I'm going to teach you financial accounting. So let's start with the concepts of financial accounting. We all know that financial accounting as being defined by the AICPA, American Institute of Certified Public Accountants. It has been defined as the art of recording, classifying, summarizing any financial transaction. Financial transaction means any transaction which can be expressed into monetary terms that has to be recorded in your accounts, in your books, and you just record, classify, summarize in a significant manner. And you, once you are recording your financial transactions which have happened in the organization, you are just analyzing and interpreting the results you are getting from the recording of the transactions. So it has been defined as the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character, and you are interpreting the results. Now, when we talk of the recording, classifying and summarizing, basically we are talking of the preparation of different kind of books. When we talk of the art of recording the transaction, now, every time the transaction means it's a financial transaction that can be expressed in monetary terms. When we record the transaction, we are talking of the journal. When we create the journal book and we pass the journal entries, the moment any transaction happens, we just record it by passing journal entries. After preparing the journal book, we classify all the transactions according to the categories we have, and then you have the summarization in the form of trial balance. We prepare trial balance where we record all the closing balances of all the accounts we have. We have different kind of accounting. We have financial accounting, we have corporate accounting, we have management accounting, cost accounting. अलग अलग तरीके की हमारे पास accounting होती है. We are going to discuss the concepts of financial accounting where we are talking of the financial transactions occurred in the organization. Now, accounting can be termed as an information system also. Accounting is referred to as the language of business. बिजनेस की हम लैंग्वेज की तरह इसको मानते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, the transactions which have happened and they are expressed into monetary terms and they are being communicated to different users we have. So basically we are accounting is basically used to communicate the financial and other kind of information to different kind of organizations or people, so that they can use various aspects of financial data or financial transactions that have happened in the organization for their some or the other purpose, जिसके लिए भी उनको information की ज़रूरत है. Basically, accounting is a kind of information system. It plays a significant role because it's providing different kind of financial information to different users. Maybe they are internal users, maybe they are external users. We talk of the shareholders, potential investors. We talk of different kind of unions, financial economists, analyst or economist, or different government organizations. Like you talk of the income tax department, sales department, excise authorities, tribunals, and all that. And apart from that, you have creditors, debtors. You may have internal users. The management of the organization, they also use different kind of information which is being provided by the whole process of accounting. That is the reason we say that accounting is playing a very significant role, and it's a kind of information system to all kind of your users, whether they are internal users of the information or they are the external users. We have the whole process in the accounting where we talk of the whole process where the the input or the financial transactions which happen in the organization, they are the inputs which we give as the data or the input, and which is being processed
with the by different people, maybe the CA or the accountants who are preparing the accounts, and the whole all the financial transactions. That means all kind of input is being processed on the basis of different concepts and conventions we have. We have generally accepted accounting principles. We have different rules, regulations, conventions on the basis of which we prepare the accounts. So basically what happens is any business transaction or event is termed as the data, that is the input, which is being collected by the people who are involved in this process, where they are preparing different kind of books or the accounts or statements, financial statements, and they process the data or the inputs on the basis of generally accepted accounting principles, concepts, and conventions. And then you have the output in the form of different kind of financial statements, like we have trading account, profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, fund flow statement, and all these kind of these financial statements are basically the output we have. Now, when we talk of the users of accounting information, I just told you that you have two categories or two classifications of the accounting information users. We have internal users, we have external users. Now, if I talk of the internal users, basically internal users are directly involved in running or managing the business organization. Like we have officers, we have partners, directors, owners, sole traders, uh, who are interested in different kind of accounting information. They just have the focus on the efficient or smooth running of the organization. And just because of this, their needs are met from the use of income statement, like we talk of profit and loss statement. Now coming back to the internal users, they basically use profit and loss state account. They have the look on balance sheet, cash flow statement, and they have, when we talk of internal users, they have direct access to different kind of reports, which may be public reports. That means which are available for the outsiders also, so that they can use it. And sometimes they have the internal users, they have the access to the private and confidential reports also, which are known as internal reports, which contain different kind of valuable informations, which may be related to manufacturing cost of the product, or different kind of pricing patterns of different products you have for sales. It can be on the basis of the product you are manufacturing, or you are purchasing it and selling it in the market, or you are manufacturing a product, what kind of strategies you are following. Every kind of information which is private and confidential, the internal users may have the access to that. And when we talk of the management people, they have the direct access to all these kind of information, just because they formulate strategies, rules, regulations, on the basis of which the functioning is being done. Different kind of operations are being carried on in the organization, and they have the focus on the smooth and efficient functioning of the organization. So they require different kind of accounting information. They are the internal users. Now when we talk of the external users, we talk of different individuals or organizations who have some kind of interest in the activities of the organization. As the internal users, they are not the internal part of the organization, and they look for different kind of information. They gather information from the published annual reports of your the annual reports of the organization, like income statement, balance sheet, fund flow statement, cash flow statement. The annual report, basically it's the companies are publishing their accounts, financial statements in their annual reports. From there, the external users are gathering and retrieving different kind of informations they need for the different kind of purposes. And in external users, you have investors who are currently the shareholders of your organization. The information may be gathered and retrieved and used by the potential investors who may be interested in investing in your company, and they'll also look at the different information which is being provided by the company through its annual reports.
and you have different kind of suppliers, creditors, customers, government, researchers, and so on. They are the external users. Now, when we talk of the financial accounting or accounting as the information system, we have its qualitative characteristics also, like any kind of information which is being provided by the company in different formats or different patterns. Like we talk of financial statements, we talk of different other kind of statements which is being used by the internal or external users for different purposes. Now the qualitative characteristics of all kind of information in financial statements, like should be like it should be clear, it should be understandable to everyone. Now the essential quality is that it must be readily understandable by the users. Now it should be in presented in such a manner that the users, like the investor, creditors, government agencies or employees, they just understand what information is being provided by the company in in your financial statements. It should be relevant also, it should be reliable, it should be comparable for different time periods, or it should be also maybe comparable with other organizations in the same industry also. तो ये सारे के सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी भी एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में होने बहुत ज़रूरी हैं, सो दैट इट इज़ एन एफिशिएंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. अगर रिलायबिलिटी नहीं है, अगर उसमें कंपैरेबिलिटी नहीं है, अगर समझ नहीं आ रहा है, रेलिवेंस नहीं है, टाइमली नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, देन इट्स ऑफ नो यूज दैट यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इट शुड बी रेलिवेंट एनफ, इट शुड बी द क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज the person or the organization who's retrieving any kind of information from all these your financial statements, it has to be used in a proper way, and they should be able to use it properly. रेलिवेंस के साथ में एक्यूरेसी, टाइमली और अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो उनके इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं फ्रॉम, बिकॉज whenever I am retrieving any kind of information from the published annual reports of the company, and I am the potential investor of the company, so my decision whether I should invest in the company or I should be away from the company, I should not invest, my decision will be depending on the information I am just getting from their annual reports. तो वो अगर टाइम पे नहीं मिलेगी, रेलिवेंट नहीं होगी, रिलायबिलिटी नहीं होगी, एक्यूरेसी नहीं होगी उसमें, या वो कहीं ना कहीं मुझे समझ ही नहीं आ रही है, तो फिर वो मेरा कहीं ना कहीं डिसीजन गलत हो सकता है. तो दैट इज द रीजन दीज काइंड ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी देयर, सो दैट द पर्सन हु इज यूजिंग such kind of information which is being provided by the company in different formats, it should be the people, whosoever the person is who's trying to take some decision. तो इकोनॉमिक पैसा कहीं पे भी लग रहा है, इकोनॉमिक डिसीजन है, it should be the person should be able to evaluate different kind of events and the information, and just take the correct decisions on the basis of the information. Otherwise it will be difficult, or it may be possible that you are taking any kind of decision that may be wrong, that may be give you an adverse impact. हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो जाए just because of any of the missing factor in the qualitative characteristics of the information which is being provided by the company. Now when we talk of coming to the objectives of accounting, हम accounts बनाते ही क्यों हैं ना, या accounting में करते क्या हैं? तो as I told you that whenever we are preparing accounts, basically what we are doing is any kind of transaction which has happened in the organization which can be expressed into monetary terms, it has to be recorded. वो रिकॉर्ड हो रही है. एक होता है ह्यूमन मेमोरी. अब ह्यूमन मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मेरी माइंड की एक कैपेसिटी है कि मैं कितनी चीजें याद रख सकती हूँ. नाउ इफ मल्टीपल ट्रांजेक्शंस are happening occurring in my organization, just because I'm a human being, it would not be I'll not be able to remember each and every transaction.
So it has to be recorded somewhere so that anytime I just need any kind of information from the past events, I can just recollect it or retrieve the information from the records I have maintained. So basically the main objective, the first objective is that the written information or the written records are always better than the information which is there in my memory. तो ह्यूमन मेमोरी आपकी कहीं ना कहीं एक लिमिट के बाद, कैपेसिटी के बाद खत्म हो जाएगी. You will not be able to recall each and every information which has happened. कोई भी इवेंट को, कोई भी इंफॉर्मेशन को आपके लिए रिट्रीव करना, उसको स्टोर करके रखना, इट्स नॉट ईजी. That is why we always need to have the written records of accounting information, and the accounting helps the maintenance of proper and systematic records of all the business transactions of financial nature. And whenever you need any kind of information or the data, it can be easily it will be easily available, just because you have the proper maintenance of the records of all the business transactions. Then the second objective is that you want to ascertain the profit or loss of the business for the time period you are taken into time period which has been in under study. It can be quarterly, half yearly, monthly, annually. तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि पूरे एक साल में मैंने मेरे बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या मैंने कितना नुकसान उठाया. The profit earned or loss incurred during the year, or it may be any time period. मैं monthly भी अगर सोच रही हूँ कि मुझे हर महीने मुझे calculate करना है कि मैंने कितना profit earn किया है, I can just do it just because of the maintenance of proper records. Then the third is that you want to ascertain the sources of the items of revenue and expenses. We have the income statement, which provides the relevant information in respect of the sources we have of the items of revenue and expenses. Like such information enables the users of accounting information to know the reasons for profit or loss, because we are having different kind of transactions. जो हमारी revenue या expense की कोई transaction होगी तो उसका कोई ना कोई source भी होगा, कोई application भी होगी कि पैसा कहाँ से आया है और मैंने पैसा खर्च कहाँ किया है, expenses कहाँ की हैं. तो basically what I am doing is I am just recording all these kind of information at a one place, and just I am able to know from where I have received money, कहाँ से मेरे पास पैसा कंपनी में आया है, कहाँ मैंने पैसा खर्च किया है, कितने मेरे expenses थे, कौन से मेरे revenues थे, and you would be able to calculate the amount of profit you have earned or loss you have incurred during the time period. Then you want to ascertain the financial position of the business, which is done through the assets, liabilities, and capital. And when we talk of the financial position of the business, we are basically talking about the balance sheet. Balance sheet we prepare at a particular date, as on, if you remember, you must have studied your financial accounts in 11th and 12th. You must remember that when we prepared final accounts, final statements, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम हमेशा फॉर्मेट में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एंड द नेम ऑफ द कंपनी फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन. तो वो हमारा पूरा एक ड्यूरेशन आ जाता है कि वो टाइम कब खत्म हो रहा है और कितने टाइम से कितने टाइम तक का हम अकाउंट्स बना रहे हैं. एंड व्हेन वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन होती है हमेशा. इट्स नॉट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन और फॉर द पीरियड एंडेड, इट्स बेसिकली ऑन. When we talk of the preparation of balance sheet, it's basically we are talking of the financial position of the business as at particular date. तो किसी पर्टिकुलर डेट पे मैं अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर रही हूँ कि मेरी कंपनी में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या कैपिटल थी. ये सारा का सारा हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट को हम लोग बनाते हैं. Then we have the focus on the ascertainment of the cash flows also, and you want to communicate the financial information to different type of users. जो हम लोगों ने अभी बात की कि जो भी हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स हैं, हम लोगों की जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल इवेंट्स की, वी जस्ट शेयर, communicate different kind of financial information to different users.
and the reason will be again depending on the situation कि हम किसके साथ अपनी information को share कर रहे हैं. Now if I talk of the creditors, तो creditors financial position के साथ में वो ये देखेंगे कि whether the company is able to repay their liability or not. अगर मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चली जाऊँ, बैंक के पास चली जाऊँ कि मुझे लोन चाहिए, अगेन दे विल बी जस्ट लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है, कंपनी पैसा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, कंपनी का पिछला ट्रेंड क्या है प्रॉफिट के टर्म्स में, हाउ मच प्रॉफिट द कंपनी इज एबल टू अर्न फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, जब से भी है वो सारा का सारा फाइनेंशियल देख सकती है. पहले कभी लोन लिया था या नहीं लिया था, लोन लिया है, कोई लायबिलिटी है तो कंपनी टाइम पे कर रही है या नहीं कर रही है. ऑल सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट, एंड देन कंपनी के एसेट्स कितने हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की स्टेटस के हिसाब से, एंड वेदर द कंपनी वुड बी एबल टू पे बैक द लोन अमाउंट टाइमली नॉट. तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन ग्रांट करने के टाइम पे देखेंगे. और इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज बेसिकली बीइंग कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू प्रिपेयर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. Then the company wants to sometimes facilitate some kind of research in business operations. When we talk of financial analysts or researchers, they just analyze the accounting information and they do the research by making the comparison between different time periods. तो अगर मेरे पास 4 साल के 5 साल के अगर financial statements हैं, then what the researchers can do or the analyst can do is they just prepare the comparative financial statements. और उसके बेसिस पर वो सारे की सारी कंपैरिजन करते हैं, रिसर्च करते हैं, एंड they may go for the calculation of different kind of ratios, different cash flow statement for different time periods to just know the liquidity, solvency, profitability of the organization, stock turnover क्या है, debtors के turnover क्या है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए they just do some kind of research for some or the other purpose. And then we may have different accounting discloses different kind of performances of the organization by just providing different kind of information like कितनी sales है, profit loss क्या है, cost of goods sold क्या है, assets की value क्या है, liabilities क्या है. So basically what happens is the actual performance is being compared with the standard performance or the planned or targeted performance. क्योंकि जब भी हम business run करेंगे, organization में हम जब काम करते हैं तो every time they have some kind of target which are supposed to be achieved. तो एक हमने standard performance set की हुई है कि ये performance होनी चाहिए, एक है कि हमारी actual performance होती है. तो what happens is कि एक हमने टारगेट सेट किया हुआ था, प्लान किया हुआ था कि भाई इतनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारी कंपनी में आनी चाहिए, एक होती है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है. जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाती है, कंपनी में काम होता है, तो व्हाट हैपेंस इज व्हाट दे डू इज कि जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे कि भाई इतनी परफॉर्मेंस, इस तरह ये लेवल पे परफॉर्मेंस आनी ही चाहिए. तो व्हाट हैपेंस इज that people who are involved in the research process or different kind of performances or in the whole process, what they do is they just compare the actual performance which is there in the organization with the standard or the target which has been already set by the management people. तो जो target था, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ था, प्लान किया हुआ था, उसको हम कंपेयर कर देते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से. तो अब उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू. लाइक इफ आई टॉक ऑफ द सेल्स के लिए जो मैनेजमेंट ने टारगेट सेट किया हुआ था या सेल्स डिपार्टमेंट ने टारगेट सेट किया हुआ था, वो उन्होंने बोला कि पर मंथ वी हैव टू सेल गुड्स वर्थ ₹4 लाख. हमारी हर महीने की 4 लाख की सेल्स का टारगेट हमने सेट किया हुआ है, होनी चाहिए. इट मे बी पॉसिबल, अब उन्होंने टारगेट सेट किया है तो कोई ना कोई तो बेस बनाया होगा इस चीज के लिए.
अदरवाइज रैंडम तो कोई फिगर वो बोलेंगे नहीं, तो किसी ना किसी बेस के हिसाब से उन्होंने 4 लाख का टारगेट सेट किया, दैट इज द प्लान्ड परफॉर्मेंस of the sales department in terms of actual sales. Now what may happen, जो हम actual sales कर रहे हैं पूरे महीने, that may be exactly the as the targeted sales figure, like 4 लाख मैंने अगर टारगेट सेट किया था तो हो सकता है वो 4 लाख ही हो सकता है 4 लाख से कम हो सकता है 4 लाख से ज्यादा हो, तो there may be the deviation in the actual performance and the planned performance or the standard performance, and that may be same. अब अगर सेम है, 4 लाख मैंने सोचा था और 4 ही लाख रुपए की सेल्स हुई, तो ठीक है भाई, हमने जो टारगेट रखा था वही हमने अचीव कर दिया. बट व्हाट इन केस ऑफ द डिविएशन और द डिफरेंस, अब टारगेट जो मेरा 4 लाख का था, हो सकता है किसी वजह से मैं 2.5 लाख या 3 लाख ही बेच पाई, मेरी सेल्स जो हुई वो 2.5 लाख रुपए 3, मतलब इट इज लेस देन द स्टैंडर्ड वन. और हो सकता है 4 से ज्यादा बेच दी 4 लाख से, तो इट मे बी मोर देन. तो व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ डिविएशन, द एक्चुअल परफॉर्मेंस मे बी लेस than the standard performance, or it may be better, it may be more than the standard one. अब होगा क्या कि जब भी आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड यू आर जस्ट एबल टू मेक कंपैरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड यू आर जस्ट हैविंग द फिगर ऑफ द डिविएशन इफ एनी, देन यू कैन इजीली एनालाइज कि कौन सी सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल थी, कौन सी अनफेवरेबल थी. अब अगर मान लीजिए फेवरेबल है, like if I have a target of sales of 4 lakh rupees and I am able to sell goods worth rupees 5 lakh, तो अभी तो I'll be happy कि मैंने टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिया है. तो मेरा फोकस क्या होगा, नेक्स्ट टाइम whenever I am just setting the standards, I'll just increase the standard. तो मैं उसको हो सकता है 4 का 5 ही कर दूं, क्योंकि मैंने 5 तो बड़ा इजीली कर लिया. नाउ नेक्स्ट टाइम the standard will be 5 lakh rupees of sales, or it may be something which is more than 4 lakh. It depends on the situation. हो सकता है मैं 4.5 कर दूं, 4.25, तो स्टैंडर्ड में थोड़ा सा बढ़ा सकती हूँ. अगर मान लीजिए डिविएशन है नेगेटिव में, अनफेवरेबल सिचुएशन है, दैट द स्टैंडर्ड वाज 4 लाख रुपीस of sales, and I could just have a sales of, let's say, 3 lakh rupees or maybe 2.5. तो उसमें क्या होगा, I'll just analyze the reasons of the deviation on the other side. Unfavorable causes क्या थे जिनकी वजह से I was supposed to sell goods worth rupees 4 lakh, तो वो भी मैंने जो एस्टिमेट किया था किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करके किसी बेस पे ही वो स्टैंडर्ड सेट किए थे. तो उसमें डिविएशन इतना क्यों है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा है तो कम क्यों हुई, सेल्स 4 लाख क्यों नहीं हुए. तो पहले मेरा फोकस क्या होगा, I'll just try to find out the reasons of that unfavorable causes, कि मेरी सेल्स 4 की बजाय कम की क्यों हुई. और फिर मैं उस पर फोकस करके उन जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितने भी अनफेवरेबल कॉजेज थे, रीजंस थे जिनकी वजह से आई कुड नॉट हैव अ प्रॉपर फिगर ऑफ सेल्स, उनको मैं अगली बार वो ना हो, क्योंकि अगली बार भी अगर मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगी तो सेल्स कम ही हो सकती है कि सेल्स कम हो. तो आई जस्ट ट्राई to remove all those obstacles. I'll just try to remove all those unfavorable reasons to have a lesser sale as the targeted sale. तो अब उसमें क्या होगा कि मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए जितने भी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स या जितनी भी प्रॉब्लम्स रही इस बार उस पर फोकस करूंगी, सो दैट इट्स नॉट रिपीटेड next time, and I'll be having the favorable factors so that I can have a better performance in terms of sales. तो कंट्रोलिंग भी जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स हमें कहीं ना कहीं जो हमारे कंपनी में परफॉर्मेंसेस हैं बिजनेस की ऑपरेशंस की वजह से, वी somehow to certain extent we can control the performance by just having the proper maintenance of books. And sometimes it's mandatory to prepare your accounts just because of different acts we have,
different provisions we have Companies Act, we have Income Tax Act, we have Sales Tax Act. तो वो सारे का सारा statutory requirement आ जाती है, जिनकी वजह से just to meet the legal requirements we are supposed to have the proper maintenance of the financial records for different kind of purposes. So all these are the different kind of objectives why we need to have the preparation of different financial statements. अब इससे यही सारे आपके एडवांटेजेस हो जाते हैं, because when we have the proper maintenance of the financial account, financial statements, we are just maintaining the proper records, and we are not based on the human memory, because it's human memory is limited, and we have the preparation of financial statements. Just because of the financial statements preparation, we can compare the results, we can help the management in taking their management decisions. We have the financial statements which provide as the legal evidences and the documents in terms of law. अगर हमें कोई क्रेडिटर्स हैं, हमारे हैं डेटर्स, अगर हम हमारे डेटर्स क्रेडिटर्स के टर्म्स में या कहीं पर भी अगर कहीं डिस्प्यूट है, then we have the financial statements which provide or which play the role as the evidence in terms of in the court of law. तो अगर डिस्प्यूट कहीं आ जाता है किसी भी तरीके का और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस का ही एक रोल प्ले कर देती है लीगली. Apart from these, when we have the proper maintenance of books of accounts, it also helps you in the taxation matters. Also, we can ascertain the value of the book, कि हमारी जो value of the business basically, sorry book नहीं, when we talk of the organization, तो on the basis of the balance sheet we have the assets, liabilities, capital. हमारी जो business की worth है, business की जो value है, वो भी हम determine कर सकते हैं proper तरीके से. In case we want to raise capital or we want to have loan from different organizations, then the lenders would be interested in gathering the information of the financial data of the organization that can be taken from the books of accounts we have prepared. तो ये सारे के सारे, इसके अलावा में एक मेजर और आपके लिए एडवांटेज हो जाता है अकाउंट्स का, that any kind of error or fraud is to certain extent prevented, क्योंकि आपके पास हर चीज recorded है, accounts आपने maintain करके रखे हुए हैं, and the companies they go for the auditing process also, where the auditors are verifying the financial data or financial information which is being recorded in different kind of accounts. So it's basically you are trying to detect any kind of error or fraud that may have taken place during the year. And in case you find any kind of error or fraud, then the remedial actions can be taken immediately so that it's not repeated again in the future, and you have the proper maintenance of books of accounts, and all the financial information is being provided to the external user also, and because they require different information for different kind of purposes. So these all are the advantages of accounting. Apart from different advantages of accounting, we have its limitations also. Major जो limitation है accounting की is that when we talk of financial accounting, we are talking of those transactions which can be expressed into monetary terms, and we are basically totally ignoring any kind of transaction which may be there, which is very important or significant for efficient running of the business organ or functioning of the organization, but just because it cannot be expressed into monetary terms, it is totally ignored. तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, however it's very important for the overall smooth functioning of the organization, it's beneficial for the company, even then it's not being recorded anywhere. So if I talk of any person who's very efficient enough, or the people who are working in my organization, they are very hard working, तो मेरे कंपनी में जो प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो उनके हार्डवर्क एफिशिएंसी की वजह से बहुत अच्छी लेवल पे है,
कंपनी में काम बहुत अच्छा हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो उनका हार्डवर्क है, जो उनकी एफिशिएंसी लेवल है, just because it cannot be expressed in monetary terms, it is actually ignored. So basically the main limitation of the financial accounting is that we don't record any non-monetary transactions, and at the same time no information about the present value of the business is there. So because when we prepare accounts, like when we prepare balance sheet में हम assets show करते हैं, तो assets are always recorded on the basis of the historical cost. These concepts we'll discuss right now. I hope you do remember we have different concepts and conventions on the basis of which we prepare accounts. So assets जो हम balance sheet में show करते हैं, they are recorded on the basis of historical cost or cost concept. That means the price or the cost at which we have acquired the asset. तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे उसको शो करते हैं, और हर साल अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो वो हम उसको माइनस कर देते हैं. तो उसकी वजह से होता क्या है कि कोई भी एसेट हमारा कॉस्ट प्राइस पे हम दिखाते हैं, एंड इन केस डेप्रिसिएशन इज सपोज टू बी चार्ज्ड तो हम लेस डेप्रिसिएशन कर देते हैं. तो हमने उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया है एट विच वी हैव acquired that asset. But it is possible that the market value may be more or less. कहीं ना कहीं उस पर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का इम्पैक्ट भी है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में. तो द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज टोटली इग्नोर्ड. The effect of inflation or deflation on the value of the fixed asset is not being considered while recording the asset in the balance sheet. तो ये जो होता है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का इफेक्ट हम अगर कहीं शो नहीं कर रहे हैं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं, what happens basically is that the balance sheet is not disclosing the true financial position of the business. Like अगर मान लीजिए, I'm just giving you example that I have purchased a land. मेरी बिजनेस 20 साल पुरानी मेरा बिजनेस चल रहा है. मैंने भी 10 साल पहले एक लैंड परचेज किया था बिजनेस पर्पस के लिए 10 लाख रुपए का. तो वो जो मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में वो 10 लाख रुपए से ही चल रहा है आज तक. उसकी जो वैल्यू मैंने दिखाई है वो 10 लाख रुपए तक की ही आज तक दिखा रखी है. लेकिन अगर मैं मार्केट में आज उसको लैंड को लेने जाऊं तो आज 10 करोड़ रुपए की है, जो मैंने आज भी 10 लाख रुपए की दिखा रखी है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है, मार्केट में लैंड के प्राइसेस बढ़ गए. फिर भी मेरी बुक्स में वो 10 लाख की ही दिखा रखी है मैंने, मगर एक्चुअली में उसकी कीमत अगर मैं देखूंगी तो इट्स 10 करोड़ रुपीज. तो व्हाट हैपेंस इज दैट प्रेजेंट वैल्यू उसकी 10 करोड़ रुपीज है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिसके बेसिस पर हम अकाउंट्स बनाते हैं वो 10 लाख की थी लैंड की कीमत, तो वो अभी तक वो ही चल रही है. बाय द टाइम आई एम जस्ट गोइंग इनटू द लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप कॉन्सेप्ट, और आई एम जस्ट गेटिंग माय एसेट्स रीवैल्यूड. Till the time I'm just getting the assets revalued, वो मेरी बुक्स में लैंड की कीमत 10 लाख रुपए ही शो होती रहेगी. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, अब यही की सिचुएशन डिफ्लेशन की भी हो सकती थी. मार्केट में किसी भी एसेट की प्राइसेस कम हो गए हैं, कीमत कम हो गई है, तो आज वो 10 लाख की जो लैंड थी किसी भी वजह से आज वो सिर्फ 7 लाख रुपए की रह गई है, तो भी मैंने 10 लाख की दिखाई हुई है. जबकि आज मार्केट में जाऊंगी तो मुझे 7 लाख में मिल जाएगी. तो एक्चुअली मुझे 7 पे दिखानी चाहिए थी, फिर भी मैंने 10 दिखा रखी, ओवर वैल्यू करके दिखाई हुई. तो व्हाट हैपेंस इज दैट इट्स नॉट गिविंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, जस्ट बिकॉज we are ignoring the effects of inflation or deflation on the fixed assets. इसके अलावा में sometimes the accountants may indulge in the process of window dressing. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि रियलिटी कुछ और है और हम सिर्फ एक इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, उसको सुंदर बना रहे हैं, अंदर से वो बिल्कुल बेकार चीज है. सिर्फ उसका इम्प्रेशन अट्रैक्ट कर दिया हमने लोगों को कि देखो कितनी स्मार्ट सी चीज है, कितना अच्छा है, ये है वो है, एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा पॉजिटिव हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन एक्चुअली में उसकी सिचुएशन उतनी वो नहीं है जो हम शो कर रहे हैं. तो इट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग. तो अकाउंटेंट क्या करेंगे, व्हाट दे डू इज कि मान लीजिए बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, तो व्हाट द अकाउंटेंट कैन डू इज लाइक इन बैलेंस शीट दे मे शो द डिफरेंट आइटम्स लाइक स्टॉक और डेटर्स विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोविजन.
जैसे आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं फाइनल अकाउंट्स के, व्हाट हैपेंस इज कि जो बैलेंस शीट में हम डेटर्स का फिगर दिखाते हैं तो डेटर्स में से बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स सब माइनस करके दिखाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि if I'm just creating the provision at a rate of 5% for doubtful debts, that means what I'm saying is कि जो मेरे debtors हैं total में, उनमें से I just expect कि 5% शायद मेरा पैसा मुझे नहीं मिलेगा, वो मेरा डूब जाएगा, तो मैं उसको एक्सपेक्टेड लॉस की वजह से डेटर्स में से माइनस करके दिखा देती हूँ। कॉन्सेप्ट है मेरा, कन्वेंशन है बेसिकली। बट होता क्या है कि जस्ट टू हैव अ विंडो ड्रेसिंग मैं उसको माइनस करके नहीं दिखा रही, तो मेरे एसेट्स बढ़ जाएंगे। अगर मैं प्रोविजन कम कर दूंगी तो एसेट उतने ही कम हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं वो प्रोविजन माइनस ना करूं तो दैट मीन्स जो डेटर्स हैं वो ज्यादा होंगे, और जितने भी एसेट्स मेरे ज्यादा हैं दैट इज बेनिफिशियल इन टर्म फॉर द कंपनी, कि भाई मेरे कंपनी के एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, कंपनी की पोजीशन बहुत बढ़िया है। मगर अब होगा क्या कि मैंने सिर्फ विंडो ड्रेसिंग करने के चक्कर में वो डाउटफुल डेटर्स के, डिस्काउंट फॉर डेटर्स के कोई भी प्रोविजन माइनस नहीं किया। तो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज दैट द बैलेंस शीट is not actually giving a true and fair view of the financial position of the business organization. जब हम अकाउंट्स की प्रिपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिकली बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उनसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की फिगर मिलती है या नेट लॉस की। तो हम ये कहते हैं कि वो हम इसलिए बना रहे हैं सो दैट वी कैन ईजिली कैलकुलेट और एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी हैव अर्नड or the loss we have incurred during the financial year or accounting year। तो वो हमें सही से फिगर आपकी पता चल जाती है प्रॉफिट की या लॉस की हमें। इसी तरह बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू हैव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो मैं अगर उसमें विंडो ड्रेसिंग कर दूंगी तो उसमें उसकी ट्रू और फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन की आएगी ही नहीं। लेकिन मेरा कोई ना कोई पर्पस है, किसी को मुझे अट्रैक्ट करना है अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन गलत बता के, आधी अधूरी बता के। तो दिस इज द लिमिटेशन दैट दे कैन डू इट, the accountants can do it, go for the window dressing system just to for some or the other reason, and you have the unrealistic accounting information in your financial statements which may be which is not actual, and it is basically something which is biased and which has been manipulated by the concerned people in the organization. इसके अलावा में if it is the accounting information we have it cannot be used as the tool for managerial efficiency and the managerial performance in case you have more profit। तो अगर प्रॉफिट की फिगर मैं देख रही हूँ और प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसमें ये नहीं कह सकती कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी में जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजेरियल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो वो बहुत अच्छी है। वो एक्चुअली उसको कहीं नहीं बता रही। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहीं विंडो ड्रेसिंग कहीं की हुई है, कहीं मैनिपुलेशन की हुई है, तो वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी सही करेक्टली मेजर हो ही नहीं रही है। जो एफिशिएंसी थी कंपनी में लोगों की, वो मैंने सही कैलकुलेट की ही नहीं है, सही मेजरमेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैंने विंडो ड्रेसिंग कर दी, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कर दी। तो इट्स बेसिकली इट्स नॉट अ बेस टू से दैट यू हैव the efficiency and smoothness in the overall functioning of the organization. Now these all are the limitations we have of the financial accounting, and we have a different basis on the or the concepts and conventions on the basis of which we prepare our different financial statements. जो concepts conventions हैं, they are basically the assumptions or the opinions or the customs we have followed for last so many years, or you can say decade, on the basis of which we are just preparing the financial statements. तो accounting concepts की अगर हम बात करें, accounting concepts are basically the foundations of the accounting information which is useful for different users. You have inventions, you have different changes in the legal, economic environment, social environment, on the basis of which you have different concepts, and we prepare the basic financial statements on those assumptions or the opinions we have. Now the first
accounting concept is business entity concept, and I hope that you all do remember all the concepts and conventions. I'm just discussing them in brief today, so that from next lecture onwards, we have next lecture on I think 13th of January, then we can start directly with the preparation of financial statements, practical portion. Now the first basic concept is the business entity concept. The business entity concept says that any organization or firm has a separate legal entity which is distinct from its owner. तो जो owner है उसकी एक अलग लीगल आइडेंटिटी है और बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी एंटिटी है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इट्स ओनर. ठीक है. अब जब भी हम बिजनेस कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस की बात करेंगे, एवरी कॉन्सेप्ट कन्वेंशन हैज सम और द अदर इफेक्ट in the organization or the overall functioning or the preparation of your accounts, financial statements. So the first concept says that business की अपनी एक आइडेंटिटी है जो कि ओनर की आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग है. अब इससे होगा क्या कि जो इसका इफेक्ट होगा इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का, इट विल बी हैविंग लाइक दिस दैट ओनली द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस विल बी रिकॉर्डेड, और उसकी वजह से कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन अगर कोई ओनर अपने लिए करता है तो वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर while preparing the financial statements, what we do in case you have in additional information, आपको दिया होता है कि ओनर ने 2000 के ड्राइंग्स की हैं पर्सनल यूज के लिए, उसने कैश निकाल लिया या स्टॉक ले लिया उसने पर्सनल यूज के लिए. तो इफ यू ऑल डू रिमेंबर, तो हम उसमें क्या करते थे, कैपिटल में से ड्राइंग्स के लिखकर हम उतना अमाउंट कम कर देते हैं कि उतना बिजनेस में से जा चुका है. वी डोंट कंसिडर these kind of transactions to be a part of the business. क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि बिजनेस की आइडेंटिटी अलग है, ओनर की आइडेंटिटी अलग है. तो ओनर ने अगर कुछ काम किया है, पैसा ओनर का ही था लेकिन अब बिजनेस का है, तो बिजनेस में से अगर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल लिया है तो वो बिजनेस में से खत्म हो गया है, तो बिजनेस की कैपिटल कम हो जाती है. इसीलिए हम उसकी कैपिटल बिजनेस में से कैपिटल में से हम माइनस कर देते हैं बैलेंस शीट में से. तो इसका मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के लिए है वो ही सिर्फ रिकॉर्ड होगी. कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन अगर है तो उसका इम्पैक्ट हमें माइनस करके दिखाना है कैपिटल में से, मगर वो कहीं पे भी उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा बिजनेस में कहीं पे भी इनकम या प्रॉफिट या लॉस के लिए. ठीक है. अब पर्सनल एसेट्स जो होते हैं ओनर के, they are also not taken into consideration while calculating the value of the asset of the business organization. तो मेरा अगर बिजनेस है तो जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया हुआ है, जो एसेट्स बिजनेस के हैं, सिर्फ वो ही बिजनेस के रहेंगे. मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस. नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज द मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, which says that in accounting a record is made only to those transaction or events which can be expressed in terms of money. तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं, सिर्फ वो ही हम ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके रखते हैं. अदरवाइज कोई भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, चाहे वो कितना भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है कंपनी में, they are not recorded anywhere in the books of accounts because they cannot be expressed into monetary terms. Like अगर मान लीजिए कोई बहुत efficiently काम कर रहा है तो उसे कंपनी में फायदा होगा, even then it is not recorded. In case we have some kind of strike in the company, तो फैक्ट्री में अगर मान लीजिए स्ट्राइक हो गई है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, लोगों ने काम ही नहीं किया, कहीं ना कहीं कॉस्ट कंपनी बेयर कर रही है सैलरी टर्म्स की, वेजेस के टर्म्स में, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं होने की वजह से, काम नहीं होने की वजह से जो नुकसान है वो कहीं पे भी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे. प्रोडक्शन हुई नहीं 2 दिन, अब प्रोडक्शन होती तो शायद वो बिकता भी, लेकिन 2 दिन प्रोडक्शन हुई नहीं है, तो वो जो नुकसान है वो हम कहीं पर भी नहीं दिखा रहे हैं, तो उसको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे कि स्ट्राइक का इम्पैक्ट क्या है. कोई बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है,
कोई आइडल बैठा हुआ है, तो ऑल जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो फेवरेबल हैं, चाहे वो एडवर्स इम्पैक्ट की कोई सिचुएशन है, एनी इवेंट which cannot be expressed into monetary terms, it is not basically recorded. This is the monetary concept. Only those transactions which can be expressed into monetary terms, only these are recorded. Then the third concept is the going concern concept, which says that whenever we start any business, it will continue to carry on its activities for an indefinite period of time. हम जब भी कोई business शुरू करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो चलता ही चला जाएगा, उसकी इंडेफिनिट लाइफ है, बंद नहीं होगा, एंड वी डोंट हैव द इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म इन द नियर फ्यूचर. हम ये नहीं इंटेंशन से बिजनेस शुरू करते कि नहीं हम बंद कर देंगे. होगा क्या, दैट इज अनफोर्सीन सिचुएशन, कि हम बंद कर सकते हैं, हमें नुकसान हो रहा है तो हम नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं. वो एक्चुअली क्या होगा तब की तब होगी, बट जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ इंटेंशंस कि हमारा बिजनेस नहीं चलेगा या बिजनेस बंद हो जाएगा. सच काइंड ऑफ सिचुएशंस मे बी देयर, बट वी डोंट अज्यूम, and we it's the concept which says that business will have an indefinite lifetime. Then the next concept is the historical cost concept or the cost concept, which says that any fixed asset has to be recorded in the books of accounts at the price at which it has been acquired. तो कोई भी एसेट मैं शो कर रही हूँ उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जिस प्राइस को देकर मैंने उसको खरीदा है, एक्वायर किया है, एक्विजिशन जो है, एक्विजिशन कॉस्ट जो है, मैं उसी पे ही रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ. एंड इन केस डेप्रिसिएशन इज सपोज टू बी चार्ज, देन आई एम जस्ट डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन अमाउंट एवरी ईयर, बट द इफेक्ट ऑफ inflation or deflation is not recorded anywhere. It's basically जो मैंने पैसा दिया है सिर्फ उस पे मैं उसको शो कर रही हूँ, less depreciation if any. Otherwise effect of inflation deflation is totally ignored in the concept of historical cost. ठीक है. Then we have dual aspect concept, which says that anytime any transaction occurs in the organization, it will have a twofold effect. Twofold effect means at least two accounts will be affected. So we have accounting equation. I hope you all remember all these concepts and conventions and accounting equation. We have assets is equals to capital plus liabilities. ये हमारी accounting equation होती है. तो when we talk of the dual aspect concept, it basically says that any transaction is there, कोई भी event हो रहा है sorry, which can be expressed into monetary terms, it has to be recorded. And once you are recording any transaction of the business, it will have an impact on at least two accounts. तो वो इक्वेशन आपकी मैच करनी चाहिए हर बार. एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगी, लेकिन कोई भी एक ट्रांजेक्शन कहीं पर भी दो अकाउंट्स को अफेक्ट जरूर करेगी. अगर कैपिटल बढ़ रही है तो एसेट्स भी बढ़ेंगे. कहीं ना कहीं अगर हो सकता है एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम जस्ट परचेजिंग द मशीनरी ऑन कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस, तो व्हाट हैपेंस इज कैपिटल और लायबिलिटीज में हो सकता है कोई इम्पैक्ट ना आए. इफ आई एम जस्ट परचेजिंग एनी एसेट ऑन कैश बेसिस, व्हाट विल हैपन, ना कैपिटल बढ़ेगी ना ही लायबिलिटीज बढ़ेंगी. एसेट बढ़ गया, मशीन आ गई, कैश में पेमेंट की, कैश कम हो गया, तो आपको वो बैलेंस हो जाएगा. तो कम से कम आपके दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे ही होंगे. दैट इज बेसिकली योर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. और एक अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली है, जिसमें एक आपका डेबिट होगा और एक आपका क्रेडिट अकाउंट होगा. देन यू हैव अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. Accounting period concept is basically something which is related to the first concept. We have the going concern concept, which assumes that the business will continue for an indefinite time period. अब accounting period में क्या है कि मैं अगर ये मान के चल रही हूँ कि मेरा बिजनेस की जो लाइफ है मेरे बिजनेस की वो इंडेफिनेट टाइम की है, तो मुझे उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटना पड़ेगा so that I can just prepare the accounts. तो मुझे क्योंकि मेरा जो one of my purpose to have the books of accounts preparation of financial statement is to calculate the amount of profit
we have earned during the time period. अब मैं अगर ये कहूँ कि भाई लाइफ मेरे बिजनेस की तो है ही इंडेफिनेट, तो व्हाट एक्चुअली विल हैपन कि जब मैं तो खुद रहूंगी या नहीं रहूंगी, मेरा बिजनेस मैं मान के चल रही हूँ कि बिजनेस तो रहेगा, तो प्रॉफिट मैं कब कैलकुलेट करूँ? उसकी वजह से व्हाट वी हैव डन इज कि जब बिजनेस खत्म हो, बंद हो, तब तक तो मैं वेट नहीं करूंगी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, तो मैंने उसके हिस्से कर दिए। उस पर्पस को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या किया है, जो पूरी लाइफ है उसको उसके डिवीजन कर दी, ईयर वाइज, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी हाफ ईयरली और मंथली, जो भी मेरी ज़रूरत है मैं उसके बेसिस पर अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हूँ कि मुझे हर महीने या हर 6 महीने में या हर साल कितना प्रॉफिट हो रहा है। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज बेसिकली अ पीरियड ऑफ 12 months which may start from 1st April to 31st of March or 1st January to 31st of December. तो generally जो financial year होता है, financial year is basically from 1st April to 31st of March. तो उसमें आप ये देख रहे हो कि पूरे साल 1st April से 31st March तक कंपनी में कितना प्रॉफिट या लॉस आपने कंपनी का हुआ है, प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस आपने इनकर किया है। तो दिस इज बेसिकली द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज and the company may have the interim reports also for shorter period of time, like अगर मैं अकाउंट्स बना रही हूँ एक साल के, तो कंपनी एक क्वार्टर या मंथली भी अपने इंटरनली अकाउंट्स बना सकती है कि भाई हर महीने या हर क्वार्टर में कंपनी की पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ investment, in terms of sales, or in terms of any item which or any transaction which is there. तो हम accounts क्वार्टरली या मंथली भी कंपनी बना सकती है अपने पर्पस के लिए। देन वी हैव द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. Realization concept is also known as the revenue recognition concept. Revenue recognition or realization concept is basically that in accounting the income means the or the profit we can say is the excess of revenues over the expenses. तो basically what we are doing is कि हम जो भी टाइम पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वी आर कंपेयरिंग द रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट टाइम पीरियड, और उसके बेसिस पे देख रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमने लॉस इनकर किया है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यूज ओनली जब हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करते हैं। तो रेवेन्यू इज बेसिकली द कैश इनफ्लो इन डिफरेंट टर्म्स। यू मे हैव द रेवेन्यू, आपने सेल्स की तो आपके पास पैसा आया, आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की उसके बदले में आपके पास पैसा आ गया, आपने कोई बिल्डिंग, कोई एसेट को आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो you are getting rent from that asset which has been provided to someone else on the rent basis. आपने इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको रॉयल्टी मिल रही है। तो इस तरह की आपने कोई सेल किया है एसेट को, तो उसमें यू मे हैव earned some kind of profit on sale of any asset. तो ये सारे के सारे आपके रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंडर में आती है सारी ट्रांजेक्शन्स, वेयर वी टॉक ऑफ एनी ट्रांजेक्शन विच इज impacting or which is concerned with the revenue. तो कोई भी आपने ट्रांजेक्शन की जिसमें you have a legal right to receive money, whether you have received or you may receive in near future. हो सकता है अभी किसी ने नहीं दी, पैसे बाद में दे देगा, लेकिन you have got the legal right to receive money from someone just to have by just having some kind of transaction. That means it has been recognized that you will be getting such kind of amount from the concerned person. So that is basically the realization concept is. Now we have the accrual concept. Accrual concept is applicable to the recognition of both revenue and expenses. Revenue recognition में या realization concept में we were talking of the revenue only. Accrual concept is talking of the revenue as well as expenses, and the concept says that the revenues are recognized when they simply become receivable, whether the cash has been received or not. तो पहले वाले में क्या था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाले में या रियलाइजेशन में,
कि जब आपके पास लीगल राइट आ जाता है पैसा मिलने का, कि आपके पास राइट है that you can claim money from the person, then it has been realized. अक्रूवल कॉन्सेप्ट में एक्सपेंसेस भी हैं और रेवेन्यू हैं, ये दोनों चीज़ें आती हैं। और इसमें आपने क्या किया है कि जैसे ही रेवेन्यूज आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे सिंपली बिकम रिसीवेबल, चाहे आपको पैसा मिला है चाहे आपको पैसा अभी नहीं मिला है। इसी तरह वी आर टॉकिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तुरंत रिकॉग्नाइज हो जाएंगे व्हेन दे सिंपली बिकम पेएबल, चाहे आपने पेमेंट की है या आपने पेमेंट अभी नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम उसमें एक्सपेंसेस दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से सैलरीज or the wages which are supposed to be paid to the workers, employees or the staff of the organization। तो आपको 2 लाख रुपए देने थे, आपने 2 लाख नहीं दिए, आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपए दिए हैं, तो हम क्या करते हैं 50,000 रुपए हम उसमें आउटस्टैंडिंग दिखा देते हैं दैट दिस इज द लायबिलिटी वी हैव टू पे टू आवर एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, तो वो हम ऐड करके दिखाते हैं। दैट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि चाहे हमने अभी दिया है या नहीं दिया है, हमें हमारी लायबिलिटी है ये पैसा देने की, हम उतना काम करवा चुके हैं, वी आर सपोज टू मेक पेमेंट, कि ये हमें पेमेंट करनी है। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। देन वी हैव द मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट इज बेसिकली when we calculate the profit primarily with the revenue and expenses item, what we are doing is we are comparing revenue and expenses, और उससे हम ये देखते हैं कि profit है या नहीं है। तो what we have to do is under the matching concept, to calculate the income we have to compare the expenses and the revenue, but we have to compare only those revenue or expenses transactions which have incurred to earn the revenue for the same accounting period। हम कोई भी रेवेन्यू को एक्सपेंस से अगर मैच करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सिर्फ उसी टाइम पीरियड के होने चाहिए जबकि हम अकाउंट्स बना रहे हैं। जैसे जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं, मान लीजिए इफ आई एम प्रिपेयरिंग माय अकाउंट्स फॉर लेट्स से 2019-20, तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April 2019 एंड इट विल एंड ऑन 31st of March 20। तो सिर्फ कोई भी इनकम, रेवेन्यू या कोई एक्सपेंस 1920 का अगर है तो ही वो उसमें आता है, बाकी सब हम हटा देते हैं। अगर उससे पहले का कोई है तो वो हम हटा देते हैं, उसके बाद का कोई है तो भी हम हटा देते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मैचिंग कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ द सैलरी अमाउंट, सैलरी में आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपीज का, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि 1920 के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 50,000 रुपीज, इट्स फॉर 1920 एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर अकाउंट्स फॉर 1920 ओनली। What will happen? I'll just add this 50,000 in the as outstanding salary. If the question additional information में ये कहता है कि 2 लाख का टोटल अमाउंट था सैलरी का जो दिया हुआ था, 50,000 रुपए 1920 के अभी आउटस्टैंडिंग है जो हमने ऐड कर दिए। उसके अलावा द क्वेश्चन सेज दैट यू हैव पेड 40,000 rupees for let's say 2016-17 or 17-18 or 18-19, any time period which is before 1920। तो what we have to do is हम उसको माइनस कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 2 लाख में 50,000 तो 1920 के आउटस्टैंडिंग मैंने ऐड किए, और उससे पहले के जो आउटस्टैंडिंग थे पिछले सालों में से किसी भी साल के जो मैंने इस साल दी वो मैं माइनस कर दूंगी। तो 40,000 रुपये जो मैंने 17-18 के दिए थे इस बार सैलरी के टर्म्स में लोगों को, एम्प्लॉइज को, वो आई जस्ट डिडक्ट that 40,000 outstanding for 16-17. So what actually I'm doing is I'm just matching the revenue with the expenses item for that particular time period for which I'm just preparing my accounts. This is basically the matching concept is. I hope it's clear to everyone. Then we have different conventions, and I hope we have finished with our over with the time. We can continue this in our next lecture. In case you have any question, then you can ask me. Shivam, you have asked me the lecture time was not visible before 9:30. I think that was not the issue. I am facing many problems with respect to
DU classes. Some of the students are facing lecture problems in attending the lectures, and sometimes the calendar is not updated. We have our next lecture on 13th. Then you just try to, check it in the evening tomorrow, because we have our next lecture on Wednesday. आप लोग कल शाम को check कर लीजिएगा. In case you have some doubt, then you can just contact your office people in SOL. They can solve this kind of situation कि आप लोगों के पास क्लास का लेक्चर का विजिबिलिटी क्यों नहीं थी. एंड इट मे ऑल्सो बी द सिचुएशन कि आप वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो देयर यू मे फाइंड सम link to join the lecture. Shruti, which topic I'm just teaching? I'm just teaching you financial accounting. We started today. I just finished off with the basic concepts and the theory portion. From Wednesday onwards, I'll just take 10 minutes to finish off with the convention portion, and then we'll start with the practical questions of financial accounts. Can we know which books should we follow? I've shared the screen. I think it's visible. I'll just write the name of the books also. You can have the books by Dr. J.R. Munga. You can have another book by Dr. B.K. Goyal, and the third book I refer is by Dr. D.K. Goyal. You you can have any of these books. All these books are good enough. You can have either of these and go through that. And in case you have any doubt anytime, you just can message me in Teams itself, so that I can just solve your queries. लेक्चर्स के लिए अगर कोई टाइमिंग्स में या कैलेंडर में अगर प्रॉब्लम है, देन योर ऑफिस पीपल कैन सॉर्ट इट आउट. In case you have some other questions, so class link. Okay, one of the student has asked me whether this class is for BCom honors. Actually, it's not for BCom honors. This is for BCom financial accounting class. But in case you want to attend this class, you can just join the class. I don't have any issues. Class timings will be from 9:30 to 10:30. Okay, Jasmeet Kaur has asked me from where we will get the notes. Okay, Jasmeet, I don't provide the notes for financial accounting. I don't think you need to have some kind of notes. You just purchase any of the books I recommended right now. What I can do is I'll just make the announcement also for the books we have, and you can just purchase any of those books. Plus, you can go through with the material which has been provided by you from SOL. That is good enough. You can go through that also, apart from any of the books I have recommended. Class timings. Okay, you'll be getting the recording of these lectures also. The today lectures, I don't think it would, because I didn't share any kind of PPT. From next lecture, when we'll be doing our practical questions, you'll be getting those questions via Teams only. I don't know, some anonymous student has written why class is too late. I don't think it's not too late. It's early in the morning at 9:30 to 10:30. The timings of the lectures are 9:30 to 10:30. I think you'll be having the same link to join the next lecture also. Some of the students have asked me this. And then okay, one of the student Ishan
has written that there are 2 classes going on. So which one to attend? Ishan, I don't know. I don't think so. That you will be having 2 lectures simultaneously. But I'll just talk to the concerned people who are just taking care of all the lectures. But as per the timetable, what I have seen is that no 2 lectures are, going on continuously at the same time. I don't know why you have asked me such question. Okay. Rahul has asked me to explain what is monetary concept. Okay, Rahul, the monetary concept in the financial accounting is that whenever any transaction happens in the organization, it may be it can be expressed into monetary terms. It can, and you may have some event or transaction which cannot be expressed into monetary terms. Like if I talk of the efficiency of the workers who are working in my organization, उसका एक्चुअली इम्पैक्ट क्या है कि वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। तो प्रोडक्टिविटी को तो मैंने दिखाया है कि बढ़ी हुई है या जो भी है, प्रोडक्शन कितनी हो रही, लेकिन उनकी एफिशिएंसी को मैं कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। दो आई नो कि वो लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर उसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो इसलिए जो भी कोई ट्रांजेक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स हमारी हम रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। तो दिस इज द मॉनेटरी कॉन्सेप्ट व्हिच सेज दैट एनी ट्रांजेक्शन which can be expressed into monetary terms has to be recorded. It is recorded, and any transaction, though it is significant, it's very important for the company, but you are not able to express it into monetary transactions, it will not be recorded. Like जैसे मैंने आपसे कहा कि कंपनी में, फैक्ट्री में मान लीजिए स्ट्राइक हो गई है, तो स्ट्राइक का इम्पैक्ट कंपनी पे जरूर आएगा, लेकिन स्ट्राइक को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एक काम हुआ, एक चीज हुई, एक ट्रांजेक्शन हुई जिसका इम्पैक्ट कंपनी पे पड़ा, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी, उसको हम नहीं शो कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में, दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। तो एनी ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, only those transactions will be recorded. Okay, most of the students were unable to join the class. I'll just convey your message to the office people. They can just take care of it on Wednesday, because majority of the students have just written the same problem. The calendar was not updated. Okay. Paman has asked me to please revise today's lecture tomorrow. Let me be very clear, I'll not be able to revise today's lecture tomorrow. We don't have lecture tomorrow. We have lecture on 13th of January, that means day after tomorrow, on Wednesday at 9:30. Main points we can discuss simultaneously, but the whole lecture, please don't expect me to repeat the lectures. My questions from a user, normal, private, man. Okay, Rohit has asked me to just let you know that theory kitne marks ki aayegi. You'll be having 100 marks, subject, out of which you'll be getting theory questions of at least 25 to 30 marks. I'll just finish with my syllabus first, and then in last lectures we can discuss the problems you will be having or the pattern of the question paper you will be getting in your exam. Video iski available hogi, but it may be after a week. You'll be getting the link at your website of SOL. Okay, Akansha Garg has asked me कि there are 2 teachers from which we have to study. Okay, I think you have 2 sections of accounts, and in one section, I think I'm just teaching. I don't know about the second one. The whole information will be there on the website or the calendar you'll be having.
Okay, Anjal has asked me कि मैम DU SOL में क्लासेस तो लगती नहीं हैं. Anjal, DU में SOL के lectures होते हैं. You have PCP lectures, though you don't have marks for your attendance right now. But in case you want to attend lectures, it would be good for you if you attend the lectures, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन lectures की limitation होने की वजह से we just go fast to finish of these syllabus. तो आपको एक ब्रीफिंग ज़रूर हो जाती है ठीक से कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. एंड आई होप आई विल ट्राई टू make the concepts clear to you all, and in case you have any doubts you can ask me. Study material के लिए you have to contact the people of SOL. I think majority of the students are concerned with the lectures and the calendar which was not updated, timings, and the public books. I'll just write the name, the publisher or authors जिनके आप बुक ले सकते हो. One is by Dr. J.R. Munga. The second one is by Dr. K. Goyal, and the third one is by D.K. Goyal. I have just written these three names in your Q&A announcements में. You just can have the name of the authors of 3 different books. ये 3 किताबों के authors के नाम लिखे हैं. आप इसमें से जो चाहें आप वो ले सकते हैं. And for your study material from SOL, you just need to talk to them only. And what I suggest is that apart from the your study material, you just go with one of the books you have. Okay, one of you have asked me to share these labels. I'll just share these labels in our next lecture on Wednesday. Right now I'm just leaving the lecture. See you all on Wednesday. Have a great day. Take care. Bye bye.